भावनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बामणिया आज वडोदरा के दौरे पर है। तब उनकी ओर से वडोदरा में कई जगहों की मुलाकात ली गई। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बामणिया सलाटवाड़ा IMA हाउस शारदा मंदिर पर सेमिनार में पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी ओर से दिवालीपुरा में कलेक्टर कचहरी की मुलाकात ली गई और वहां पर सांसद जन सेवा केंद्र की भी उनकी ओर से शुभकामना मुलाकात की गई। इस दौरान विशेष तौर पर वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया, कलेक्टर भरतभाई पटेल, मेयर पिंकीबेन सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, दंडक शैलेश पाटिल, विधायक चैतन्य देसाई और साथ ही अन्य काउंसिलर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि सांसद जनसेवा केंद्र पर केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बामणिया का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया था और फिर उन्हें वडोदरा की कार्यशैली के बारे में ज्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई थी। इस दौरान वडोदरा के कई लाभार्थियों को नीमूबेन बामणिया के हाथों उनके लाभ मुहैया करवाए गए थे। આજે ભાવનગરના લોકપ્રિય સાંસદ અને ભારત સરકારના કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી નીમુબેન બામણિયાજી આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા છે। જેવું આપણને ખબર છે કે કટોકટીના આ 50 વર્ષ અને સંવિધાન હત્યા દિવસ જ્યારે સમગ્ર દેશની અંદર આપણે લોકો ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છે, એને લઈને યુવાનોને અને પ્રબુદ્ધોને સંબોધવા માટે માનનીય મંત્રીશ્રી આજે પધાર્યા છે, ત્યારે એમને સાંસદ જનસેવા કેન્દ્રની મુલાકાત કરાવી અને કયા પ્રકારે વડોદરાના લોકોને આ જનસેવા કેન્દ્રનો લાભ મળી રહ્યો છે એમના વિશે એમને માહિતગાર કર્યા। સાથે એમના સ્વહસ્તે ઘણા આપણા લાભાર્થીઓને લાભ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો અને એમના દ્વારા અમને પણ એક માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું। એ બદલ મંત્રીશ્રીનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।